Gokul, Mahavana, Mandal, Uttar Pradesh, India. Sri Mahavana is situated on the eastern bank of the Yamuna, in the northwestern corner of Sanatana. This 8th forest is situated 8.5 miles from Sri Mathura. Sri Krishna performed many pastimes here in his childhood, therefore a person who goes there will be worshipped in Indraloka. Mahavana, although it was once a large and verdant forest with a parikrama of around 12 kilometers, there are hardly any trees remaining there today. Mahavana was the second largest forest after Mahavana, and the name Mahavana means great forest. Nevertheless, one can still see all the places where Krishna enjoyed his transcendental pastimes during his early childhood, kaumara-lila, at Gokula. The ancient village of Gokula, which is presently known as Mahavana, is the original village named Gokula where Nanda Maharaja and Yashoda Mai had their residence and where Krishna spent the first 3.5 years of his childhood. The name Gokula actually means the residential place of cows. The word go means cow and kula means residence or living place, or in other words Gokula was a village inhabited by cowherd men and their cows. Krishna's childhood pastimes at Gokula are in particular very sweet, and more easily understood by the ordinary people in general. Krishna's pastimes of stealing butter and yogurt from the houses of the married gopis, and then feeding that same stolen butter and yogurt to his friends and also the monkeys, or his letting loose the gopis' calves so they would drink all the cow's milk, or his slaying of so many demons, are just some of Krishna's many childhood pastimes that can be appreciated by people of all ages. On the other hand, Krishna's amorous pastimes with the young gopis of Vraja are not so easily understood, even by greatly learned scholars, philosophers, and pious religionists. Lord Chaitanya Mahaprabhu also visited Mahavana while on his parikrama around the sacred forests of Vraja. How to get there? You can go by taxi or you can hire an auto from Vrindavana to take you around Raval, Doji, Chintaharanagata, Brahmandagata, Gokula, and Ramanika, drop you back to Vrindavan. They normally charge around 800 to 1000 rupees. This is the famous site of the Damodara-lila where baby Krishna, who was tied to a large grinding mortar, caused the 2 Yamalarjuna trees to come crashing down. When Lord Chaitanya reached this spot during his parikrama, he became exceedingly blissful as he relished Krishna's pastime of breaking the 2 enormous trees. The Chaitanya Charitamrita says, Sri Chaitanya then went to Srivana, Lohavana and then to Mahavana and saw Gokula, the place of Krishna's childhood pastimes. Upon seeing the place where the twin Arjuna trees were broken by Lord Krishna, Sri Chaitanya Mahaprabhu was moved to great ecstatic love. की जय, कृष्ण बलराम की जय। ये नंदा महाराज का हाउस था ना, ये 7.5 किलोमीटर में घर था नंदा महाराज का। अच्छा। 9 लाख गाय इधर को बास करता था। अच्छा। कृष्ण भगवान गोपी घर में जाकर के माखन चोरियाँ करते थे, मिट्टियाँ खाते थे, सारी गोपियाँ कंप्लेंट करती थी। तो जिसका मुझे को गुस्सा आने लगी कि हमारे घर में 9 लाख गाय का माखन होता है, तुम लोग गोपी घर में चोरी करते हो, आज हम तुमको उखड़ में बांध करके रखेंगे। तो जिसका मुझे भगवान को कौन से दिन मांगा था? दीपावली के दिन किसी को बंधन किया। तो ये कुबेर के 2 पुत्र थे सामने में, उनका महाराज जी ने उनको श्राप दिया कि जाओ तुम दोनों भाई पेड़ बन जाओ। तो ये मेरे हमने कहा बनाई कि नंद महाराज के आंगन में जाकर के पेड़ बन जाओ। तो ये पीछे में जाकर के दोनों भाई पेड़ बन करके तपस्या कर रहे थे। तो भगवान को याद नहीं ना कि मेरे को पेड़ का उद्धार करना है। तो भगवान माखन चोरी करने लगे, गाय के बच्चों को छोड़ देते थे, तो गाय बच्चे दूध पी जाते थे। तो गोपी उससे काट लेकर के आती थी। तो जैसा भैया को गुस्सा आ गई कि आज हमारे घर में 9 लाख गाय का माखन होता है, तुम लोग गोपी घर में चोरी करते हो, आज हम तुमको उखड़ में बांध करके रखेंगे। तो जैसा मुझे भगवान को बांधती थी ना, सारे 9 लाख गाय की रस्सी आ गई, 2 रस्सी कम पड़ती थी। तो भगवान बोले कि भैया मेरे को प्रेम से बांधती है कि क्रोध से बांध रही है? तो जैसा भैया बोली नहीं, मैं तेरे को प्रेम से बांध रही है। तो भगवान बोले कि ये तुम्हारी आँख से जो आंसू जो निकलते हैं ना, ये तो क्रोध के आंसू निकल रहे हैं, गुस्से के। तो जैसा भैया बोली नहीं, ये मेरे भक्ति के आंसू है। क्रोध का आंसू अलग होता है, भक्ति का आंसू अलग होता है। भक्ति का आंसू कैसा निकलता है हमारे में? ठंडा निकलता है। क्रोध का आंसू गर्म होता है। इनके साइड अलग अलग होता है। भक्ति का आंसू होता है ना, इस साइड से निकलता है, देखो इधर से निकलता है भक्ति का ठंडा।
होठ का आंसू एकदम डायरेक्ट निकलता। अच्छा। तो जैसा मैया बोली ये तो मेरा भक्ति का आंसू है, तो भगवान बोले कि मैया हम इतना रस्सी से नहीं बनेगा, केवल हम तो प्रेम डोरी से बनेगा। तो जैसा मैया बोली प्रेम डोरी कहाँ से लाएं कि दूध चलाने वाली रस्सी जो माखन निकालती थी, और अपनी जो बाल बांधने वाली रस्सी लेकर के आओ, तब मेरे को बंधित करो। तो भगवान को जिस टाइम यानी दीपावली के दिन भगवान को बांध करके चले गई थी कहाँ, रसोई में। आज दीपावली का दिन है ना, क्या बनाने का है, खीर बनाना है, अच्छा। पूड़ी बनाना है, पकौड़े बनाना है। शाम को किसका पूजन करना है, गणेश जी लक्ष्मी जी का। तो जिस टाइम या रसोई में चले गए, नंद महाराज भी चले गए, तो कृष्ण भगवान को याद हुआ ना मेरे को पेड़ का उद्धार करने का। तो जिस टाइम मैया भगवान को उखल को खींच करके लेके गए कृष्ण भगवान, जहाँ पेड़ों में इस प्रकार से दोनों पेड़ों में उखली रखी और भगवान के चरण लगने से ना पेड़ गिर पड़ी। अच्छा। तो जब पेड़ गिर गए तो सारे ब्रह्मांड में आवाज गई गई, तो यहाँ शंकर जी, ब्रह्मा जी, नंद महाराज भी दौड़े चले आ गए। तो बोले यहाँ तो बड़े बड़े राक्षस आते हैं, यहाँ तो पूछना आ रही है ना, बकासुर, तड़ावत, सट्टासुर, धनकासुर, ये 7 राक्षस कौन भेजते थे, राजा कंस भगवान को मारने के लिए। तो नंद महाराज बोले तो गोकुल को हम लोग छोड़ते हैं। तो बलराम जी बोले अब कहाँ जाओगे, हमारे 7 किलोमीटर में घर है, नंद महाराज है, निवास करते हो तुम लोग। तो बोला हमारा कृष्ण यहाँ सुखी नहीं है, कभी तो पूतना आ रही है, कभी बकासुर आ रहे हैं, कभी तड़ावत आ रहे हैं। अच्छा। तो नंद महाराज बोले गोकुल को हम लोग छोड़ देते हैं। अच्छा। यहाँ से कहाँ चलते हैं, वृंदावन में। अच्छा। तो वृंदावन धाम है ना, वो तुलसी का पेड़ है। अभी तो नया फ्लैट बन गया, बड़ा रूम बन गया ठहरने के लिए, पहले घोर जंगल था। तो नंद महाराज बोले गोकुल को हम लोग छोड़ करके चलते हैं वृंदावन के लिए। तो पेड़ गिरेगा तो चोट नहीं लगेगी। तो यहाँ शंकर जी, ब्रह्मा जी ने यहाँ आ गए ना अपने आसन लेकर के अपने विमान से उतरने लगे। तो यहाँ शंकर जी, ब्रह्मा जी बोले ऐसे कृपा हुई हमारे लाला के ऊपर में। कौन थे कृष्ण, छोटा सा एक लाला था। तो नंद महाराज बोले हम लोग गोकुल को छोड़ देते हैं, यहाँ से कहाँ चलते हैं, वृंदावन के लिए। तो यहाँ शंकर जी, ब्रह्मा जी ने यहाँ 3 दिनों की रात नाक रगड़े थे अपना। तो ऐसा बोलते थे ना तुम्हारी नाक तोड़ देंगे, नाक रगड़ देंगे। तुम लोग यहाँ भगवान के चरणों में यहाँ नाक रगड़ देंगे ना, तो कहीं संसार में फिर नाक रगड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। और यहाँ माथा लगाना है, बोलना है कि प्रभु हमारा अहंकार खत्म करना। अहंकार होता है ना सर, एक तो प्रॉपर्टी का अहंकार होता है, एक लक्ष्मी का अहंकार होता है, और एक भक्ति का भी अहंकार होता है। तो यहाँ अहंकार नष्ट होता है। ये जल थोड़ा आँख में लगाना है कि प्रभु हमारी दृष्टि को शुद्ध करना। जैसे दामोदर अष्टक में नमामि स्वरम, जितने भी सुरंगकार है ना सबको शुद्ध करना दामोदर भगवान। कि दामोदर हम तुम्हारे घर आए हैं और तुम हमारे घर जरूर आना। ये हमारी अर्जी को मंजूर करना, क्योंकि यहाँ सूक्ष्म दर्शन है, कोई बिल्डिंग नहीं, कोई इमारत नहीं है, आपकी क्या बिग टेम्पल की दुनिया है, सजावट की दुनिया है, भीड़ की दुनिया है। यहाँ तो हमारे इस्कॉन के भक्त लोग हैं ना, वही स्पेशल आते हैं। तो यहाँ भगवान का गौ सेवा है, आरती सेवा और फूल सेवा में अच्छी सेवा में लगती है। ये तो शीलपाद प्रभुपाद महाराज की कृपा है। किसकी? क्यों कि ये शीलपाद प्रभुपाद महाराज यहाँ दामोदर अष्टक का गुणगान नहीं कराते। आप लोग को आप लोग यहाँ 3rd क्लास के टेम्पल में क्यों आ रहे होते? बड़े बड़े टेम्पलों में आप लोग भीड़ हो रही है, दुनिया जा रही है। तो हम लोग भी यही भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे इस्कॉन के भक्त लोग बढ़ते रहे। तो आप लोग भक्ति में मन लगाए रखेंगे ना, तो दामोदर आपको कल्याण करेंगे। कहते हैं चले गोकुल धाम और अमर करेंगे अपने माता पिता का नाम। शरीर को काल खा जाता है, मगर सेवा को काल नहीं खाता है। ये सेवा करो धर्म उपकार है। श्री प्रभुपाद ने यहाँ तपस्या करने के बाद में तब यहाँ ये पवित्र जगह है। जैसे हम लोग आपके वहाँ जाते हैं ना, तो आप कहाँ मिलेंगे पता है? हाउस में, घर में मिलेंगे। और हम तुमको अलग अलग ढूंढेंगे तो नहीं मिलेंगे। तो ये कृष्ण का निज घर है, आप लोग। तो भगवान ऐसे ही शीलपाद प्रभुपाद बोले हमने 84 कोस परिक्रमा किया ब्रजमंडल। तो बोले कि कृष्ण भगवान हमको कहीं नहीं मिले, कहाँ मिले? घर में मिले। तो यहाँ निज धाम है कृष्ण का। अभी यहाँ भगवान वास करते हैं। अभी यहाँ भगवान आपको वास करते हैं। कृष्ण ये नाभि स्वरूप गोकुल यहाँ अभी आपको देख जगह है, यहाँ से 1 सेकंड भी नहीं जाते। यहाँ से कृष्ण चले जाएंगे तो ये संसार नहीं रहेगा। जितना नाभि में से प्राण निकल जाएंगे तो ये बॉडी नहीं रहेगी। समझ गए? कृष्ण की जगह है। बोलो दामोदर भगवान की ऐसा हाथ जोड़ो, मुझसे बोला हे दामोदर, हे कृष्ण भगवान, प्रभु हम तुम्हारे हैं, तुम हमारे हो, इसीलिए हम लोग आए हैं। ऐसा आने का अवसर हमको कार्तिक मास में जरूर देना। हे दामोदर, हमारी सेवा को मंजूर करना। आरती सेवा, दीपदान सेवा, फूल सेवा, खिचड़ी भोग सेवा जो हम करते हैं,
हमारी सेवा को मंजूर करना। आपका शुभ नाम? साध्वी। बेटे का नाम? गोपाल। और ये भी गोपाल कृष्ण। अपना गोत्र नहीं जानेंगे। Kuver had two sons, Nilakavara and Manigriva, who were followers of Rudra, Lord Shiva. One day they both got drunk from Varuni wine and with rolling eyes they began to play naked in the water of the celestial Mandakini river with some Apsaras, heavenly damsels. At that time Devarsi Narada happened to pass by, and when he saw the two Gayakas he understood that they were drunk. The naked goddesses that accompanied the two immediately dressed themselves in great shame, afraid of a curse, but the two naked Gayakas did not dress themselves. Hence the sage Narada angrily cursed them, saying, "You are intoxicated by lust and you are shameless like trees, therefore stay on earth embodied like trees." Hearing the curse of the sage they came back to their senses and begged the sage for forgiveness. Then the sage said, "When 100 celestial years have passed, Bhagavan Shri Krishna will descend to earth, and at that time you will be redeemed." By his grace, following the curse of the sage, the two Gayakas took birth in Gokula as two Ardana trees. One day the household maidservants were engaged in other works and Yasodamata was churning curd herself. At that time Shri Krishna became desirous to drink the breast milk of her curd churning mother, so just to awaken her love he held the churning rod and forbade her to continue churning. Yasodamata looked at the smiling face of Shri Krishna, who had climbed on her lap and made him drink the milk that trickled from her nipples out of motherly love. Meanwhile the milk on the hearth became overheated and boiled over, so Mother Yasoda quickly ran there, leaving Shri Krishna behind in an unsatisfied state. Then Shri Krishna angrily broke the pot of butter with a stone, shedding false tears, and went outside of the house to eat the butter. Meanwhile Mother Yasoda had taken the boiling milk from the fire and returned to her work of churning yogurt, but when she came there that the yogurt pot was broken. Seeing that this was the work of her son and that he had disappeared, she went out to search for him. Seeing his mother coming with a stick in her head, Shri Krishna fearfully began to run away, and mother ran after him. Seeing his mother's endeavors, the primeval Lord Govinda voluntarily slowed down and mother caught him. Loving Mother Yasoda, understanding that her son was scared, threw away the stick and began to bind him with ropes, but as she began to do so she saw that the rope was 2 fingers too short. Even when she collected all the ropes that the Gopis possessed and all the ropes that she could find in her house, mother could not bind up Shri Krishna. Seeing these endeavors of his perspiring mother, Shri Krishna mercifully had himself bound up in the end. Mother Yasoda bound her son around his belly to a grinding mortar and returned to her household duties. Because Shri Krishna was bound around his belly, Udara, by this rope, Dhamma, in the month of Kartika, this month is also called Damodara month. The width of those 2 fingers represent what it is required to bind Krishna with our love. One is our enthusiasm and perseverance to serve, even in the face of all obstacles. Krishna sees that for his pleasure, are we getting discouraged by success or failure, honor or dishonor, pleasure or pain, happiness or distress, health or disease, victory or defeat. The second finger represents Kripa, Krishna's kindness, Krishna's mercy, because no matter how enthusiastic we are, or how we persevere, it is not enough unless Krishna reveals himself to us, by his own sweet will. It is a descending process. We could never know him. Shri Krishna now slowly approached the place where the 2 trees were, dragging the grinding mortar behind him. Shri Krishna came in between the 2 trees and the grinding mortar got stuck behind the trees in a crooked way. Then Shri Krishna pulled strongly at the grinding mortar and the trees along with their roots, broke with a loud noise and fell to the ground. Then suddenly Nilakavara and Manigriva came out and began to offer praises and pay obeisances unto Shri Krishna, by whose grace they attained liberation. When Nanda and the other cowherds heard the sound of the falling trees, they came to the spot and became doubtful when they heard that the trees had apparently been uprooted by the child. Seeing his son bound with ropes, pulling at the mortar, Sri Nanda Maharaj smiled and released him from the bondage. This pastime took place when Shri Krishna was 2 years and 3 months old.
Pujari was telling that Lord Shiva and Lord Brahma rubbed their nose at the feet of Lord Krishna at this place for 3 days. If we rub our nose on Lord Krishna's feet at this place, we will never rub our nose in this material world. If we touch our forehead onto Lord Krishna's feet at this place, then our pride of property, pride of bhakti and pride of wealth will go away. We can also touch the offered water to our eyes and pray that it clear our vision. भगवान से यहाँ मिलने के लिए आई थी, यहाँ फर्स्ट में मिलन हुआ, यहाँ से तो फिर वृंदावन महाराज दिया। तो राधा रानी बोली कि आज तो माखन चोर उखल में बंधे नहीं है, तो यहाँ मिलने के लिए यहाँ से फिर वृंदावन महाराज से किया था। तो ये साक्षी जी करती हैं राधा रानी, साक्षी गोपाल। कभी आप लोग जगन्नाथपुरी गए ना, वहाँ साक्षी गोपाल जी का दर्शन है, और यहाँ गोकुल में साक्षी गोपाल जी का दर्शन है। ब्रज मंडल यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। गुरु बहन ज्ञान नहीं मिलता है, माता बगैर जन्म नहीं मिलता है, और साक्षी बनती है अधूरी होती है। तो यहाँ 84 को यात्रा की साक्षी होती है। तो साक्षी में क्या होता है कि भगवान का यहाँ फूल सेवा होता है, और भगवान का यहाँ खिचड़ी भोग सेवा, अपने जो इस्कॉन टेम्पल है ना, खिचड़ी भोग सेवा होता है। तो भक्त लोग आते हैं तो यहाँ खिचड़ी भोग सेवा करते हैं, और यहाँ माथा लगाना है, दंडवत करना है, कहीं दामोदर हमारा 84 को ब्रज मंडल यात्रा पूरा करना, और हमारी खिचड़ी सेवा को स्वीकार करना। Sri Radha went to meet Lord Krishna at this place Milanstali, before going to have a Maharas in Vrindavana. At Milanstali, flower and Khichdi Bhaga offering is done. It is said that we should pray in Milanstali that our 84 Kas Vraja Mandal Parikrama be successful. भगवान ने बोला कि जाओ तो पुत्र कामी से यज्ञ कराओ, तब कन्या की प्राप्ति होगी। तो यहाँ दिखाई करके ना 11 ब्राह्मणों को यहाँ यज्ञ कराया गया था। अच्छा। तब कृष्ण की प्राप्ति हुई थी। अच्छा। तो ये यज्ञ कुंड का भी यज्ञ कुंड यहीं पर हुआ था यज्ञ। अच्छा। हाँ। ये ले सकते हैं। सही बात। Yamuna Devi did 60,000 years of tapasya. When we pray to her at this place, she removes the obstacles in our bhakti and clears us from the sins that we have accumulated over 7 births. 7,000 वर्ष तपस्या किया था जमुना मैया ने। जो कृष्ण की भक्ति में जो विघ्न बाधा आती है ना, ये जमुना माता यहाँ दूर करती है। अच्छा। ये 7 जन्म के पापों को भी नष्ट करती है। अच्छा। तो मुझसे बोला ही जमुना मैया, हे जमुना मैया हमारे कृष्ण की भक्ति में जो विघ्न बाधा आती है उनको दूर करना, हमारा मन कृष्ण की भक्ति में लगाए रखना। हे यमुना मैया हमको बार बार ऐसा अवसर देते रहना। बोलो जमुना मैया की जय। आज की आनंद की जय। तो थोड़ा हंस लो गोकुल में। हा। It was here at Nanda Goshala that the name-giving ceremony of Krishna and Balrama was performed in secret by Gargamuni. This was due to the fear of further reprisals by Kamsa if he got some idea that the 8th child of Devaki was still alive and living in Gokula. It was here in Nanda's Goshala that Gargamuni made his prophecies regarding Krishna's present and past lives, and also revealed before Nanda Baba that his extraordinary son was in fact the Supreme Personality of Godhead, as well as the eternal consort of Srimati Radharani. Due to the Yadamaya potency, Nanda Maharaja forgot what Gargamuni said, that his son was in fact the Supreme Lord. Nanda Baba Goshala. Situated on top of a small hill known as Nanda-tila, is the famous Chaurasi Khambha, which is said to have been built by the celestial engineer Vishvakarma for the benefit of Krishna's father Nanda Maharaja, the king of the cowherd men. The name Chaurasi Khambha means 84 pillars, and this kind of building, besides being an opulent status symbol with its intricately carved stone pillars, was generally used as a darbar or assembly hall, where the king would meet his ministers and subjects. This is the most important archaeological remains of Krishna's childhood pastimes at Gokula, and is also known as the Nanda Bhavan, and it would have been an important part of Nanda's palace complex.
The word Bhavan generally a large palatial residence or a place for guests and visitors. A great festival to celebrate Krishna's birth was held at Nanda Bhavan, where Nanda Maharaja freely distributed immense wealth and thousands of cows to the Brahmanas. Buildings or pillars made from solid rock are almost indestructible and can survive the ravages of time just the same as natural rocks, which could last even millions of years. The Chaurasi Khambha is now used as a temple containing the deity of baby Krishna lying in a swinging cradle, with the deities of Nanda and Yashoda standing behind with Balrama in between them. In the courtyard there is an ancient pipal tree or asvata vriksha, which is believed to be a wish-fulfilling kalpavriksha tree. This unusual tree is said to produces 5 different colored flowers or blossoms during the year and is said to have been here since Krishna's time. There are a number of other shrines in the courtyard, including one dedicated to Lord Balrama. बद्रीनाथ जाते हैं, वहाँ कच्ची चने की दाल, सोना, 5 तरह की मेवा, तुलसी का भोग दिया जाता है। और यहाँ जन्माष्टमी के लिए माखन मिश्री भोग दिया जाता है। भगवान कहीं खाते नहीं, भगवान तो हमारी आपकी भावना के भूखे हैं। खाने वाले यहाँ गौशब्द ब्राह्मण हैं। मथुरा की बेटी, गोकुल की गाय, कर्म फूटे तो दूसरा गाँव जाए। अभी हमारे ब्रज में गाय बेची नहीं जाती है, बाजार नहीं लगता है। ये अंत समय हमको बैतरणी पार करता है। 84 कोस में आइए, हर अतिथि को रोज भोजन है। 5,500 मंदिर है, वो ट्रस्ट बना दिया है। खाने घर जाने को प्रसाद है। भोग की यहाँ 3 सेवाएं हैं, राजभोग, मंगल भोग, बाल भोग। जो हरिभक्त यहाँ राजभोग देते हैं वो मंदिर के लाइफ मेंबर हो जाते हैं। उनके परिवार का रोज भोग लगता है। रोहिणी बलराम, अयोध्या में राम लक्ष्मण का छठी है, गोकुल में कृष्ण बलराम का छठी है। चरण की कल्प वृक्षा ट्री। The word Mandala means the place where Putana was liberated, and this is the site where the witch Putana was killed by baby Krishna and received liberation. When Sri Bali Maharaja gave charity on the order of his Sri Guru Devasukrakarya, Sri Bhagavan descended to earth to accept the charity in the form of a Brahmana boy. Seeing Vamanadva, Sri Bali Maharaja's daughter, named Ratnamala, thought to herself, "Aha! How beautiful this boy is! If he was my son, I could hold him to my bosom and feed him my breast milk." A little later she said, "This Brahmana boy has stolen everything from my father on the pretext of asking him 3 steps of land in charity. Therefore, if this was my child, I would kill him by giving him my breast, smeared with poison." Hari, who appeared in the form of a Brahmana boy, then mentally blessed the devoted daughter of Bali, "May your desires be fulfilled." At the end of Dvapara Yuga, this daughter of Bali Maharaja took birth as a servant of Kamsa in Mathura, named Putana. On Kamsa's order, Putana went to Gokula to kill Krishna. Putana, who was a Kamakarini, a woman who can assume any form she wishes, assumed the form of a beautiful woman through her own Maya and thus entered Sri Handlaya. Coming there, she held Krishna on her lap with motherly love and lifted him to her breast, which was smeared with poison. Putana thought to herself, "Poison is smeared on my breast, so Sri Krishna will surely die when he drinks this." As baby sucked the milk from Putana's breast, he also sucked out her very life air. Suddenly feeling the excruciating pain of death, Putana suddenly began screaming, "Leave me! Leave me!" thus breathing her last. As soon as she was dead, Putana assumed her own witch-like form again, but Sri Krishna gave her the destination of his mother after she died. After that, Mother Yasoda and the other cowherd women arranged for Sri Krishna's protection in all respects by waving the tail of a cow around him, with feelings of motherly love. This pastime of killing Putana took place on the 7th day after Sri Krishna's advent.
पूतना उद्धार स्थल। Just opposite from Nanda Bhavana is an underground cave where Srila Sanatana Goswami lived and performed bhajana during the time he stayed at Gokula. The cave is said to go underground for about 30 feet. One day Sanatana discovered a small deity of Yogamaya Devi in her form as Durga, deep within the cave, which he named as Patala Devi, which is a name of the goddess Durga. He then began to worship this deity, and many years later the cave entrance was excavated and made larger, with a temple being built on the spot. Now, besides the original deity found by Sanatana, there is a much larger deity of Patala Devi or Durga. According to the Bhakti Ratnakara, one day Sanatana was chanting on his beads near to where Krishna and Balrama played in the sand on the bank of the Yamuna, known as Ramanika, and now called Ramana Reddy, when he noticed some children playing nearby. He was particularly attracted by one very beautiful and charming little cowherd boy. After observing the boy for some time, Sanatana felt convinced that this was not an ordinary boy, but could be Krishna himself, enjoying childhood games with the local cowherd boys. When the children stopped playing and went home, in order to clear his doubt, Sanatana followed this unusual little boy just to see where he was living. When the boy went inside a nearby temple, Sanatana also went inside, but to his surprise found himself alone inside a temple, with the little boy nowhere in sight, as if he had completely vanished. The only other person inside the temple was a deity of Madana-Gopala. Sanatana immediately bowed down before the deity and, without uttering a word to anyone, and in a deep mood of contemplation, returned to his cave near Nanda Bhavan. The Bhakti Ratnakara also says that Sanatana Goswami went every day to have darshana of Madana-Gopala, whom he used to call Dana Mohana, due to the deity's most bewildering, Mohana, and inconceivable pastimes. It is also said that when Lord Chaitanya visited Mahavana during his Vraja-Mandala parikrama, he also went to the temple of Madana-Gopala and felt great ecstasy while looking at the deity. Lord Nityananda also had darshana of Madana-Gopala some years earlier when he also came on parikrama to Gokula. The exact location of this temple is at present time not clear. The only known temple of a similar name in the area is the Gokula Mandira at Gokula Garden on the bank of the river Yamuna, about half a kilometer west of Mahavana. According to the ancient records called Sevya Prakatya, Sanatana Goswami obtained this deity of Madana-Gopala as a gift from Parashuramachab, a resident of Mahavana in 1534, after which Sanatana took the deity to Vrindavana, where he installed him on top of the hill called Dwadashditya and later built a temple there called the Madanamohan Mandira. देवी मंदिर सनातन गोस्वामी के साथ। Below are the details of my other videos. All glories to Srila Prabhupada. All glories to Sri Sri Guru and Sri Sri Gauranga.